Good morning, everyone. Welcome to the morning call. We start with technical and derivatives outlook. So in yesterday's session, we saw the continuation of the prop booking, and we saw the Nifty made a low of 16,463 and Bank Nifty made a low of 36,334. We have to be little cautious because below yesterday's low, Nifty might correct another 100 odd points on the downside, and Bank Nifty might see some more corrections of 250 to 300 points on the downside. So there's a little cautious view. What we are saying is we are approaching the gap, the gap area, which was formed on 28th July. The gap was close to 16,360 levels. The overall trading support for the Nifty is 16,400 and 16,350, and supports for the Bank Nifty is 35,800. The bias is positive, and hence this decline should be viewed to add long position. In Bank Nifty, ICICI Bank and SBI is something which can be added on the corrections. If we come to the derivatives outlook, the put call ratio has slipped below one level, which is at 0.99. And the rollover for the Nifty is 49% and Bank Nifty is 43%. The advanced decline ratio for the index was negative, so slightly on a cautious note. Some of the long build-ups which were seen in index was Coal India and BPCL, whereas the short build-up was seen in NTPC, Infosys, and Kotak Bank. Coming to the FI data, FIs were the net sellers. They sold close to 923 crores in futures and 1,548 crores in cash, whereas DI were the net buyers in yesterday's session. The technical call for the day is JSW still. We are recommending a buy in the range of 592 to 596 with a stop loss of 581 for the target price of 620. Derivatives call for the day is SBI card August call option at strike price is 900 in the range of 28 to 30 with a stop loss of 18 for a target of 51. Thank you, and over to Bhavish, sir. Hi, good morning all. So starting with some of the updates, first Asian Paints results, revenue were up 54%, but gross margin slipped only 70 basis points. So what we have seen in manufacturing or B2C companies also that there are margins have slipped by more than 100 basis points, but here Asian Paints has more or less broadly managed to keep its margin intact. And also it maintained a double-digit revenue guidance. So overall, very quite positive result. Then on Bajaj Auto, results were broadly in line. Net sales at 8,000 crores and EBITDA at 1,300 crores. But EBITDA margin again down by 70 basis points compared to our estimate of 16.2%. Currently, we are still neutral on Bajaj Auto. Then on Relaxo. So Relaxo, very weak results below expectations, although net sales increased 34% YOY to 667 crores. But there was a fire incident in the warehouse in Haryana, and hence EBITDA margin actually fell by 40 basis point YOY to 12.9%. So overall, this incident has not impacted the business very meaningfully. And then we move to L&T. So L&T revenue increased 22% YOY to nearly 3,600 crores. And Bloomberg estimate was just around that only, so more or less broadly in line. But EBITDA fell 2% to 312 crores, 3,120 crores. But EBITDA margin was lower by nearly 200 basis points YOY to 8.7%. Then there is an update on Wipro. Wipro has won 5-year digital transformation deal from Nokia. So it's a renewable deal, and currently the deal value is unknown. And then last two updates on Axis Bank. So Axis Bank, CCI has approved Citi's consumer business acquisition. They have announced earlier, so this is more of a formality. And lastly, Phenolics Industries has reported has appointed as CEO Mr. Ajit Venkatraman. So it's a good new management change. A lot of management changes have a big impact on the business going forward. So these need to be tracked very closely. That what changes he is bringing. And then today there are results. Key results are Tata Motors, Maruti, Biocon, Bajaj Finance, Laurus Labs, APL Apollo Tubes,
and Colgate. So these are the key results that will be reported today. That's it from me. Over to you guys. Yeah, thank you, sir, and good morning, everyone. First, we'll see M&M has launched as a new tractor facility in Brazil. This is a part of its global push and as a strategic global expansion in the tractor market. And first of all, that and they want to be, we have to set up the assembly place in US, Turkey, and India, and become the top 3 of the 5 tractor markets. Secondly, if you see, Sun Pharma has also expanded the tie-up for the Cassiopeia acne cream to 6 countries. And this is they have signed an agreement also to license and supply to them. That is Japan, Australia, New Zealand, Brazil, Mexico, and Russia. And this they will also develop and commercialize Win and Levy. Thirdly, if you'll see, ONGC has also inked an MOU with Greenco to manufacture green hydrogen, and Greenco is also India's leading renewable energy company, and this MOU will be valid for 2 years. Zydus Life Sciences has said that they received an USFDA approval to market the generic version of bisoprolol fumarate tablets that is used to treat high blood pressure. JSW Energy has also got an NCLT proposal to acquire in the Bharat Energy Utkal, which has a developing of 700 megawatt thermal power project in Odisha. And this in Bharat also owns a 700 megawatt construction thermal power plant also. So that would be from mine. I'll hand over to Prabhakar sir for more updates. Thank you. Thank you, team. Good morning, everyone. Fed meeting, Fed meeting would start. So global markets are weak due to that, and we need to understand, we are not in the best of the market. Crude is still at elevated level. It's at $100, but there are many things, which will give us opportunity. So we need to be nimble. We cannot be stuck with, few sectors of stock which is not performing. Now, yesterday we said that 16,200 is a very important level, and 15,500, if it corrects only, we will know whether the trend is reversing or we are still in the upside trend. Till then, sideways movement is possible. Defense Minister has approved arms procurement proposal worth 28,732 crores. We like many defense related stock. Many are in the PSU pack. Bharat Forge in private is something we like in that segment. Union Bank came with the results. Union Bank result on the face of it looks very good. Net interest income is 7,582 crores. NIMS is at 3%. Profit after tax is higher by 32% at 1,558 crores. The total advances has increased by almost 13% at 7,28,635 crores, and gross NPA is slightly elevated at 10.22 and net NPA is 3.31. But if you compare year-on-year basis, gross NPA and net NPA has come down, but it has not come down below 8%. If you notice Canara Bank, it was below 8%. That has not happened here. They have 8,729 branches. So very big bank because of the merger, but still, the results comparatively is very good in all PSU banks. Ujjivan, a small finance bank, came with the results. Their advances has increased by 38%. But we need to understand these are low tenure loans, so the churning will be very high. But still, 19,409 crores is the total loan book. Net interest income was higher by 8% at 600 crore. And for all these microfinance lenders, the NIMs are very high. Previously we talked about Bandhan Bank at 8%. Here it is NIMs, net interest margin is at 9.6%. And profit after tax is 203 crores, and it is a turnaround. Last year it was making losses. This year it has started making profit. Tata Power came with the results, wonderful results. The revenue was higher by 43%. A power sector company reporting 43% growth is very difficult. Normally 10-15% growth we see.
but 43% is a growth. It is 14,495 crores. It is because of the power shortage. Their Mundra plant started to operate at higher capacity, which has boosted it. And their profit after tax also was higher by 90% at 883 crores. But margins were down, because they bought coal at a higher level. Their margins were relatively down at 11.6%. Their order book is EPC order book, mainly solar. They are into solar roofing, solar pumps, and the other solar plant. They recently installed in Kerala floating solar project also, and their debt is at 42,343 crores. It is at a very elevated level, but being Tata Group company, they can manage. Yesterday we had a con call in the evening. There were 2 queries asked, which I was not able to answer at that point of time. One was Hindustan Power Exchange, whether it is listed or not. It is not a listed company. And somebody asked me about vinyl chemical. So when I read the balance sheet, I found a few interesting facts. It is a trading company. It is not a manufacturing company. They don't manufacture anything. But 40% of the stake is held by Pidilite company. So it is a trading company. Yeah, they have reported a EPS of 19 rupees for last financial year. But I don't like trading companies because they don't have a business model. Now, sometimes they make good profit, sometimes they don't make profit also. But the important point is Pidilite is holding 40% stake. Why they are holding, I don't know. Maybe we will again look at it more deeply. Aditya Birla Sun Life Mutual Fund, they came with the results, very disappointing results from them. Revenue was 304 crores, which was very flat, and profit after tax was down at 102 crores compared to 154 crores. Their mutual fund AUM increased by 2% to 2,81,500 crores. The Axis Bank has got a CCI approval for taking over Citibank assets and liabilities, which is positive for Axis Bank. Larsen and Toubro came with the results. Wonderful results. Revenue was higher by 22%, and for a company like L&T, revenue moving up 22% is very high. And for a profit after tax was higher by 45%, and order book was at 3,63,000 crores, which is higher by 12%. KEI reported results. Their revenue was higher by 53% at 1,565 crores. EBITDA margin 10.42. Profit after tax was higher by 54% at 104. Very good results in KEI also. They are into cable business. And McDowell or United Spirits as it's called, they also reported wonderful results. 34% revenue growth at 2,169 crores. Their EBITDA margin is 12.6%. Profit after tax is higher by 3 times. Last year it was 69 crores, now it is 210 crores. So very good results from McDonald's, but it is not a cheap stock. But due to good results, there can be some rally in the stock. IMF has cut India's growth forecast to 7.4%. So 80 basis point cut they have done, and global growth to slow to 3.2 this year. That is calendar year, and next year it will be 2.9% is what they have said. Atul came with the results. It is a chemical company, so their revenue was higher by 37% at 1,477 crores. EBITDA margin at 18%, but profit after tax has come flat. So their raw material cost has gone up. So not a wonderful result, but revenue growth is there. So when you have a revenue growth, the profits over a period of time, profits will catch up. So profit after tax is 163 crores. So I think Atul, if it corrects, it will be a good chance for a long-term investor to buy. Shoppers Stop came with the results.
From 200 crores last year, they made 948 crores as a revenue. But they reported last quarter, last year's quarter. Now they have reported 22.8 crore as a profit. 5G spectrum auction, 1,45,000 crores on the day one has been received. Positive for Indian government because revenue collection or their thing will be higher. Unilever CEO has commented that volume growth is not seen in business. It is only value growth because of inflation pressure and price hike, which can have a negative impact. But he has mentioned one more thing, that there is rural weakness is seen in India. So that is something negative. But anyway, they have hiked prices and they think they will make good margins. With that, over to you, Kshitija. थैंक यू सर. गुड मॉर्निंग एवरीवन. अभी हम लोग कॉल का एक बार हिंदी में कर लेते हैं. फर्स्ट अपडेट है कि एशियन पेंट्स के कल नंबर्स आए थे. नंबर्स काफी अच्छा आए थे. जो रेवेन्यू था वो 54% से बढ़कर आया है. ग्रॉस मार्जिन स्लिप हुआ है स्लाइटली 70 बेसिस पॉइंट से. और उनकी जो मैनेजमेंट ने जो गाइडेंस दी है, उन्होंने डबल डिजिट ग्रोथ का गाइडेंस मेंटेन किया हुआ है. नेक्स्ट नंबर आए थे बजाज ऑटो के. रेवेन्यू जो है बजाज ऑटो का वो 8 बिलियन है, जो हायर है 4% से, जो हम लोगों ने एस्टिमेट किया था उसे. इबिटा 13 बिलियन है, जो लोअर है स्लाइटली 0.5% से. और जो उनका एडजस्टेड नेट प्रॉफिट है वो 12 बिलियन है, जो अप्रॉक्स 2% अबव है अवर एस्टिमेट से. करंटली अभी स्टॉक के ऊपर होल्ड रेटिंग है और जो टारगेट प्राइस है वो 3820 है. रिलैक्सो के भी नंबर्स आए थे. जो रिलैक्सो के जो नंबर्स आए थे, जो एस्टिमेट से काफी नीचे आए थे. जो उनका नेट सेल है वो इंक्रीज हुआ है 34% से ईयर ऑन ईयर. और उनका इबिटा जो है वो इंक्रीज हुआ है 30.2% से ईयर ऑन ईयर. और जो उनका इबिटा मार्जिन है वो डिक्लाइन हुआ है 40 बेसिस पॉइंट से ईयर ऑन ईयर, जो अभी 12.9% है. बेसिकली उनके ये क्वार्टर में वो एक फायर का एक्सीडेंट हुआ था, जो उनका रेंटेड वेयर हाउस है हरियाणा में उधर. तो उसकी जो गुड वर्थ थी वो 319 मिलियन थी, वो डिस्ट्रॉय हो चुकी थी. और कंपनी ने अकाउंट किया है जो लॉस वो 15.9 मिलियन है. तो इसके कारण थोड़ा बहुत जो इम्पैक्ट है वो देखने मिला. नेक्स्ट अपडेट है लार्सन एंड टुब्रो के ऊपर. कंपनी ने नंबर्स रिपोर्ट किए तो रेवेन्यू जो है वो अप है 22% से 35,853 करोड़. उनका इबिटा है जो स्लाइटली फॉल हुआ है 2% से. और उनके जो मार्जिन है वो भी 8.7% से इंक्रीज हुए हैं. ओवरऑल उनका जो पैट है वो भी 45% से इंक्रीज हुआ है. ओवरऑल गुड नंबर्स आए थे कंपनी के. और जो अभी कंपनी के ऑर्डर बुक है वो 3,63,000 करोड़ कुछ अराउंड है. नेक्स्ट अपडेट है विप्रो के ऊपर. विप्रो को एक डील मिली है. डील है नोकिया से 5 इयर्स डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की. ये जो डील है वो रिन्यू वाली डील है. विप्रो इनका जो डिलीवर करेगी बिजनेस सर्विस नोकिया के लिए, जो ऑपरेटिंग मॉडल और फोकस करेंगी प्रोसेस ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर. करंटली डील की वैल्यू अभी तक पता नहीं है. नेक्स्ट अपडेट है एक्सिस बैंक के उनके लिए जो सीसीआई ने अप्रूवल दिया है सिटी कंज्यूमर बिजनेस एक्विजिशन का. तो ये एक वॉच आउट करने जैसा रहेगा. इसके अलावा जो फिनोलेक्स इंडस्ट्री है, उन्होंने अजित वेंकटरामन को अपॉइंट किया है सीईओ के लिए. तो बहुत सारे मैनेजमेंट चेंज होने के बाद बहुत सारे चेंजेस होते हैं, तो वो ये भी जो भी चेंजेस होंगे ये देखने जैसे होंगे कंपनी के ऊपर. आज बहुत सारे कंपनी के रिजल्ट्स है, बट उसमें मेन रिजल्ट्स है टाटा मोटर्स, मारुति सुजुकी, बायोकॉन, बजाज फिंस, लॉरस लैब, एपीएल, अपोलो, कोलपाल. बहुत सारे रिजल्ट्स है, तो उसमें ये की रिजल्ट्स है जो हम लोग वॉच आउट कर सकते हैं. M&M जो कंपनी है, उन्होंने न्यू ट्रैक्टर फैसिलिटी ब्राजील में स्टार्ट करने का प्लान किया है, जो उनको ग्लोबल पुश देगी. सो ये जो ग्लोबल एक्सपांशन की जो स्ट्रेटेजी है उससे ये करेंगे कि जो मैन्युफैक्चर है मोस्टली और असेंबली करेंगे यूएस, टर्की और इंडिया में. तो इंक्रीज करेंगे जो उधर की जो फुटप्रिंट है लोकल मैन्युफैक्चरिंग बेस के साथ. तो ये एक अपडेट है M&M के ऊपर. सन फार्मा कंपनी, उन्होंने एक्सपांड किया उनका टाई अप कैसिओपिया के साथ, जो एक्ने क्रीम बनाती है 6 कंट्रीज में. जो
तो ये टाइप है वो एक्सक्लूसिवली रहेगा कि डेवलप करेंगे और कमर्शियलाइज विनलिवी के साथ, मतलब विनलिवी के तरफ से। नेक्स्ट अपडेट है ओएनजीसी के ऊपर। ओएनजीसी ने एक एमओयू साइन किया है जो ग्रीनोको जेरोक प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो जॉइंटली रिन्यूएबल ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रीन अमोनिया और जो अदर डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स है ग्रीन हाइड्रोजन के, वो मैन्युफैक्चर करेंगे। और ये जो ग्रीन को एक वन ऑफ द इंडिया की जो लीडिंग रिन्यूएबल एनर्जी की कंपनी है। तो और जो ये एमओयू है वो वैलिड रहेगा 2 years के लिए। नेक्स्ट अपडेट है जाइडस लाइफ साइंस कंपनी है, उनको फाइनल अप्रूवल मिला है यूएस हेल्थ रेगुलेटर से, जो जेनरिक वर्जन है बाइसोप्रोपिल फ्यूमरेट टैबलेट का, जो हाई ब्लड प्रेशर के लिए टैबलेट ट्रीट होती है। और ये अप्रूवल जो है यूएस एफडीए का, वो जो स्ट्रेंथ है वो टैबलेट की वो 5 mg और 10 mg है। जीएसडब्ल्यू एनर्जी है, उन्होंने उनसे एनसीएलटी जो नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल है, उन्होंने उनका जो प्रपोजल है अक्वायर करने का इंडियन भारत एनर्जी जो डेवलप करेंगे 700 मेगावाट थर्मल पावर प्रोजेक्ट उड़ीसा में, तो उसके लिए एनसीएलटी ने अप्रूव किया है। और ये जो इंडियन भारत ओन्स जो 700 मेगावाट का जो ये पावर प्लांट है, थर्मल पावर प्लांट, वो भी अंडर कंस्ट्रक्शन है। नेक्स्ट अपडेट है फेड की मीटिंग स्टार्ट हो गई है, तो ग्लोबल मार्केट थोड़ा बहुत वीक लग रहा है। तो इवन क्रूड की जो प्राइसेस है वो भी अभी भी एलिवेटेड लेवल्स पे है, लाइक $100 के अराउंड। कल भी हम लोगों ने आपको जो इवनिंग में कॉल हुआ था उसमें भी बोला था कि 16,200 लेवल एक इम्पोर्टेंट लेवल है, और जब तक वहां तक थोड़ा बहुत करेक्शन आता है तब तक ठीक है, बट 15,500 लेवल ब्रेक किया तो ट्रेंड हम लोग चेंज होते हुए देख सकते हैं। अभी साइडवेज मोमेंटम आप देख सकते हो। तो फेड की मीटिंग के बाद मार्केट के ऊपर क्या रिएक्शन आती है वो वॉच आउट करने जैसी रहेंगी। गवर्नमेंट ने डिफेंस सेगमेंट के लिए कुछ अमाउंट प्रोक्योर की है, तो ओवरऑल ये पॉजिटिव है डिफेंस के लिए। तो पीएसयू और स्टॉक्स भी है डिफेंस में, और इसके अलावा भारत को जो प्राइवेट कंपनी है डिफेंस में वो हम लोग को अच्छी लगती है। यूनिकॉर्न के नंबर्स आए थे, नंबर्स पीएसयू में काफी अच्छे नंबर्स आए थे। उनका 32% से इंक्रीज होके 1558 करोड़ है, और जो उनका टोटल इनकम है ड्यूरिंग ये क्वार्टर में वो राइज होके 20,991 करोड़ के अराउंड है। और जो उनकी मतलब बहुत ही अच्छा रिजल्ट कंपनी ने ये किया है। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक है, उनके भी नंबर्स आए थे, एडवांसेस 38% से इंक्रीज हुए, लोन बुक है वो उनका 99,409 करोड़ के अराउंड कुछ है। उनका नेट इंटरेस्ट इनकम जो है वो 600 करोड़ है, और उनका जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है वो अच्छा मतलब हायर आया है 9.6% से, और जो उनका पैट है वो 203 करोड़ है। तो लास्ट क्वार्टर में कंपनी ने लॉस रिपोर्ट किया था, पर अभी प्रॉफिट रिपोर्ट किया, तो कंपनी का नंबर्स टर्न अराउंड हो रहे हैं। टाटा पावर्स के भी नंबर्स आए थे, नंबर्स काफी अच्छा है। पावर सेक्टर में रेवेन्यू इतना अच्छा रिपोर्ट करना एक डिफिकल्ट रहता है, बट कंपनी ने काफी अच्छे से नंबर्स मतलब बिजनेस अच्छा हुआ है। रेवेन्यू जो है उनका 43% से इंक्रीज हुआ है 14,495 करोड़। और ये नंबर्स अच्छा है क्योंकि जो पावर शॉर्टेज था उसके वजह से जो उनका मुंद्रा पावर प्लांट है वो अच्छा काफी अच्छे से परफॉर्म किया। इसके अलावा उनका जो पैट है वो 90% से इंक्रीज होकर 883 करोड़ है, और स्लाइटली उनके मार्जिन डाउन है क्योंकि उन्होंने जो कोल है वो हायर लेवल्स पे बाय किया था। उनकी जो ओवरऑल ऑर्डर बुक है वो काफी अच्छी है, और उन्होंने रिसेंटली इंस्टॉल किया था फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट केरला में, और उनकी जो कंपनी की डेप्थ है वो कुछ 14,343 करोड़ है। कल आप लोगों में से कल कौन कॉल हुआ था उसमें 2 क्वेरी हम लोग को पूछी गई थी, उसके आंसर हम लोगों ने नहीं दिए थे। तो एक था हिंदुस्तान जिंक पावर लिस्टेड कंपनी है कि नहीं, तो हम लोगों ने चेक किया, ये कंपनी लिस्टेड नहीं है स्टॉक एक्सचेंज पे। नेक्स्ट क्वेश्चन था विनाइल केमिकल के ऊपर, तो उसकी बैलेंस शीट हम लोगों ने रीड की, तो ये एक ट्रेडिंग कंपनी है, ये कोई भी मैन्युफैक्चर नहीं करते हैं, और इसका जो 40% स्टेक है वो पीडीलाइट के अंडर है। तो हम लोग को मोस्टली ट्रेडिंग कंपनी के जो मॉडल है वो पसंद नहीं है, क्योंकि उनका कोई भी मतलब मैन्युफैक्चरिंग नहीं रहता है, तो बिजनेस मॉडल नहीं होता है। तो ये विनाइल केमिकल के ऊपर अपडेट है। आदित्य बिरला सन लाइफ कंपनी है, उनके भी नंबर्स आए थे, नंबर्स इतने कुछ अच्छे नहीं आते, रेवेन्यू फ्लैट था और पैट 143 करोड़, पैट भी डाउन ही था।
नेक्स्ट अपडेट है मैकडॉल और यूनाइटेड स्पिरिट्स के भी नंबर्स आए थे। नंबर्स काफी अच्छे हैं। रेवेन्यू 34% से इंक्रीज हुआ। उनका पैट भी 3 टाइम्स हायर था, 210 करोड़। बट स्टॉक चीप नहीं है, बट रिजल्ट्स अच्छा आने के कारण आप स्टॉक के इसमें आज रैली देख सकते हो। जो IMF है उन्होंने जो इंडिया की ग्रोथ है वो 7.4% से 80 बेसिस पॉइंट से कट की है, और जो ग्लोबल ग्रोथ है वो ये कैलेंडर ईयर के लिए 3.2% बोली है, और नेक्स्ट कैलेंडर ईयर के लिए 2.9% रिपोर्ट की है। अतुल केमिकल कंपनी है, उनके भी नंबर्स आए थे। 18% से उनका EBITDA इंक्रीज हुआ है। पैट फ्लैट ही था, 163 करोड़। रॉ मटेरियल कॉस्ट के जो प्राइसेस है वो ऊपर जाने के कारण अब ये थोड़ा बहुत पैट के ऊपर आप लोगों ने इम्पैक्ट देखा। नंबर्स काफी इतने अच्छे नहीं थे, उसके कारण स्टॉक में करेक्शन आ सकता है, बट करेक्शन आने के बाद आप ये स्टॉक को बाय कर सकते हो लॉन्ग टर्म के हिसाब से। लॉन्ग टर्म के लिए करेक्शन बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी। शॉपर स्टॉक के भी नंबर्स आए थे। रेवेन्यू 948 करोड़ था। प्रॉफिट उनका 22.8% से इंक्रीज हुआ है। 5G स्पेक्ट्रम ऑक्शन है, उसमें गवर्नमेंट ने कुछ 1,48,000 करोड़ रिसीव की है, तो ये अमाउंट गवर्नमेंट के लिए अच्छी है। हिंदुस्तान यूनिलीवर के जो CEO उन्होंने अपडेट दिया था, उसमें एक इम्पोर्टेंट है कि रूरल सेगमेंट है उसमें वीकनेस दिख रही है इंडिया में, ये निगेटिव है, बट ओवरऑल उन्होंने जो प्राइसेस है उनके इसके ऊपर वो इंक्रीज कर दी है, तो इतना इम्पैक्ट नहीं होगा। दैट्स इट फ्रॉम आवर एंड। थैंक यू एवरीवन फॉर जॉइनिंग द कॉन कॉल। हैव अ नाइस डे।